तो ऐसे हुआ है वेलकम हमारा माला डाल के ताज होटल में, ताज सीता दे। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो ये है होटल का नाइट व्यू, आप देख सकते हो, बहुत ही शांत है। हमने यहाँ पे चेक इन किया है रात के 3 बजे, इसलिए बहुत सन्नाटा छाया हुआ है दोस्तों। और आपको समुंदर भी दिख नहीं पा रहा है क्योंकि अंधेरा है। ये देखिए, मैं हूँ और ये मैं पोज कर रही हूँ पीछे वाले सीन के साथ, जो है स्विमिंग पूल का और सी का। आप देख सकते हो समंदर की लहरें आपको दिख रही होंगी वीडियो में। तो ये है होटल का सामने का व्यू, जिसमें है स्विमिंग पूल और समुंदर। पीछे आपको समुंदर की लहरों का आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। अभी मैं दिखाऊंगी इस होटल का इंटीरियर आपको। ये है गोवा का ताज सीता दे होटल, जो है दोनापौला में। आप देख सकते हो, मैं इंटीरियर्स आपको इस होटल के अभी दिखा रही हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ऐसा इंटीरियर है इस होटल का। मैं आपको डिटेल में इसके इंटीरियर्स आपको दिखा रही हूँ। गाइस, आप भी अपने आँखों को खुश करिए। So, we are staying in Taj Sita Day Hotel in Goa. So, I'm going to show you some photos, videos, and some shots of this hotel. So, our apartment where we are staying now, the room, and with the room they have given this terrace, this huge terrace with a sitting outside and a table, and drying clothes ka equipment. Not the equipment, but the stand for drying clothes. And this is a huge terrace they have provided with this suite. So we are there. This is not our private terrace. We are sharing this terrace with three to four more rooms, as you can see. That is our apartment. Okay, and this whole is the Sita Day Hotel, Taj Hotel. It's very nice. As of now, our experience is very nice. Superb experience. And as you can see from this terrace, we have got this view of beach. ये हमारा व्यू है हमारे होटल से, जहाँ पे हम लोग रह रहे, ताज सीता दे होटल. Just get a glimpse of this view from our terrace. This is our terrace. That is our apartment there, as you can see. And this is a fabulous view. And this is actually the private property of Taj Sita De Hotel. ये उनका प्राइवेट बीच है. इसका एक्सेस सिर्फ ताज वाले जो गेस्ट है ताज होटल के, उनके लिए ही है. और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे आप देख सकते हो. मैं आपको एक क्लोज ग्लिम्स दे देती हूँ. स्पीड बोटिंग, जेट स्की, सब कुछ है यहाँ पे. वहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्लाइडिंग भी हो रहा है वहाँ पे. तो ऐसे बहुत सारी स्पोर्ट्स भी यहाँ पे हो रहे हैं. एंड आपके लिए ही है ये. इट्स ओनली फॉर यू, ओनली द ताज होटल गेस्ट. इट्स अ प्राइवेट बीच. सो अभी ही हम लोग लास्ट नाइट यहाँ पे आए हैं 3 बजे. सो रात में तो बीच नहीं दिख रहा था मतलब थोड़ा सा दिख रहा था लाइट में. आई हैव टेकन द वीडियो ऑफ दैट टू. आई विल शेयर विथ यू. एंड दिस इज़ द डे टाइम नाउ. इट्स व्हाट, यहाँ पे बज रहे हैं 1 बज रहा है. 1 बजने में 5 मिनट बाकी है. तो
एकदम फैबुलस लाइट है, सनलाइट, और सनलाइट में आपको व्यू अच्छा दिखता है, सब कुछ आप अच्छे तरह से देख सकते हो। सो ये ऐसे है। तो पूरा होटल का भी मैं आपको टूर कराने वाली हूँ। जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे, यहाँ से मेरे टेरेस पे ये स्विमिंग पूल जो है उनका है किड्स के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस है वो स्विमिंग पूल में भी, किड्स के लिए, अडल्ट्स के लिए, या वो लैप पूल जिसे बोलते हैं, लैप पूल जिसे बोलते हैं, वो भी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। प्राइवेटी एकदम मस्त है, वेरी कूल। मतलब जो आप पे करते हो वैसा आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है उस कॉस्ट का। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको चार्ज किया है बट वैसे कुछ सर्विसेज आपको दे नहीं रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा है इन लोग का हॉस्पिटैलिटी, अच्छा है इन लोग का जो सर्विस है, वेरी नाइस। और अगर दूर में अगर कैमरा जूम करती हूँ तो वहाँ से आपको पूरा, जैसे कि वहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स आपको, ये देखो ये दोनापोला है बीच, ये देखो ये उसका जेट्टी जैसे आप लोग बोलते हैं वो है, यहाँ से दिखता है। बीच पे जाओगे तो पूरा आपको क्लियर दिखेगा। और जैसे ये, और उसका जो गोवा का सिटी है वो यहाँ से आपको दिख जाता है। जैसे मैं अभी कैमरा जूम करती हूँ तो आपको दिखेगा। देखिए जितना मेरा कैमरा जा सकता है उतना मैं आपको जूम करके दिखा सकती हूँ। थोड़ा स्लो हो जाती हूँ। मेरा कैमरा का एक्चुअली मेरे बहुत अच्छा है, मेरे मोबाइल का कैमरा जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए आपको दूर का भी मैं दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे आपको अभी पता नहीं आपको कितना दिख रहा है, बट जूम क्वालिटी इज़ वेरी नाइस ऑफ माई कैमरा। सो ये है, जैसे अभी ये पूल भी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। ऐसे है। और अभी मैं खुद को आपको पता चले कि सच में यहाँ पे हूँ। ये पीछे बीच मैंने अभी आपको दिखाया, आपको दोनापाला का यहाँ से आपको वो जेट स्की जो है वो ट्रीज के यहाँ पे देखिए आप, ट्रीज के बीच में से उसका थोड़ा व्यू है। तो मैंने आपको कैमरा से जूम करके दिखाया। ये अपना प्राइवेट बीच है, आप देख सकते हो। आप देखिए मैंने जो आपको बताया वो स्विमिंग पूल पीछे दिख रहा है ये, और ये हमारा टेरेस है, और वो हमारा पीछे जो दिख रहा है वो हमारा अपार्टमेंट। तो ये जैसे कि 2 फ्लोर्स का है, बहुत बड़ा नहीं है बिल्डिंग। तो यहाँ पे लिफ्ट भी आप कम यूज़ करते हो, आप स्टेयरकेस से ही यहाँ पे आपका चढ़ना उतरना हो जाता है, क्योंकि 1-2 फ्लोर्स भी है। ओके, तो अभी नेक्स्ट मैं आपको पूरा होटल का टूर मैं कराऊंगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम लोग 3 डेज के लिए है। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मिलती हूँ मैं आपको, बाय। So like this is the entrance to our room. This is one room here, and there is stairs, then there are rooms upwards also, and there's greenery all, as you can see. And at this side is our room 416. This is a bell right here, and we just need to swipe the card like this so the doors gets open. Green light. Here is the entrance of a flat. I'm placing the card here, and now I'll give you the room ka tour. At the entrance only they have given one big wardrobe, as you can see. Then there's a small table to keep your luggage or anything that you wish to. And this is a hall. The sitting they have given. These are the paintings, you can see. And this is one corridor. It's total 100% privacy is there in this apartment. Like if you can see from corridor on also, there's open space with full of greenery and blue sky, and no one's around. It's a complete privacy here.
And this is the chair given here. So this is the small gallery they have given, that too private. I'm closing this curtains. Then this is one study table they have provided with a chair and table lamp, dustbin, and this is a huge television TV screen. This is a mirror here. It's a big one, you can see I'm standing. And besides the main entrance, they have given this toilet. See, this is the powder room. Only washroom and mirror with basin, soap, hand towel, dustbin. This is the powder room. Then this is the bedroom, master bedroom, you can say. The entrance. Besides the entrance, there is one table they have given to store your luggage or whatever you wish to. There is a used wardrobe they have given with your safe case, with your safe and ironing table with iron. And we had a marriage anniversary, so these are the balloons they have placed. They have decorated the room with balloons, as you can see on the light. And this is other big mirror here with light. And this is the master bathroom. Okay, at the entrance you can see this is the shower area where you can take shower. There's hand shower there. There's mat. So this is the shower area with a door, proper sealed door. Then there's this bathrobe. Two of them they have provided. This is a mirror, hand towels to store your toothbrush, toothpaste and all. There's a tissue box, tissue paper box. Then this is the bigger mirror, the plant, basin. And this is one big standing mirror they have provided. As you can see your whole self in the mirror. And this is a commode, English commode, dustbin, intercom. If you feel like you're not in an emergency case, you can use that phone. Or anything, if you can order from there also. Okay, or you want to call someone for help or for housekeeping, you can call them from there. Okay, so this is the whole bathroom concept. Again, I'll show you. It's the big one. So this was the bathroom. Then this is a large. This is a huge terrace here, as you can see, and you can have the beach view from here. See the beach. And this one more flat is here, which is sharing this terrace. Okay, so this terrace, this big one terrace is not the private one. It's common for 4 flats here, 4 to 3 flats. Okay, that is our flat. Now we are going to enter in the flat. Okay. See, this small terrace is the private one for our flat. No one will come here rather than us, with proper sitting to have your breakfast, lunch, dinner, or just to relax. They have given this clothes stand for drying your clothes. Okay, and then you enter in your master bedroom from this terrace. Okay. So I'll just shut the master bedroom. Yeah. Now this is a small table for you to work, keep your laptop set. This is a light they have given. This is one sitting they have given, extra sitting, painting. This is the main entrance of master bedroom. This is the bedroom, king size bedroom. Now it's messed up because we were
staying, we are lying here and we are relaxing. Your master bedroom with false ceiling, proper lighting they have given. Okay, this wardrobe. Then we'll enter from master bedroom to your hall. Okay, this is the table with all your necessary things, like they have provided freezer here inside to keep your soft drinks, cold drinks, anything. Thermos they have given, and the coffee, tea, sugar sachets they have provided. It's a big compartment. We had coffee, so the cups are lying there on the table just like that. There's a painting, beautiful painting. Then here table lamp with setting arrangement, chair, sofa, and the footrest with a used table. Then again there's a painting. You can see false ceiling they have provided. Lighting is very nice. They have given air conditioned facility is also very nice. Okay. Then again there's another table with your intercom. And main part I wanted to show you is there a switch thing. See, it's like a concealed buttons they have given. See, it's not the normal buttons. Here, I can show you here also. See, this is the master. For the whole lights are gone. Okay. Again I'll press this. You will see from closer. The lights are on. So this thing I like. It's a different. You will not see it in your daily life. Okay. So that is the new thing which I observed here and which I came to know. So yes, this is the room. Here, this is the air conditioned thing they have given again to increase your temperature or to decrease, and set it. In the master bedroom also they have given the same AC thing, AC remote. Okay, so now I'll show you the main entrance from outside. I'll remove this card and I'll go outside. So safe bye to the apartment. Bye bye. And this is the door closed, main door of the room. This is the room number, and again the bell facility is the same as I told you. See, you can hear the sound. And this was the main door. Then again there's a sitting here outside, some plants and with the greenery, lush greenery on the back side. So this apartment is full of privacy. You will feel isolated here. Okay. Chalo, I'll end the video. Bye bye. So guys, if you like my video, then please like, share and subscribe to my channel, and also don't forget to press the bell icon besides the subscribe button, so that whenever I post my video on my channel, you will not miss it. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं मेरे नए वीडियोस मेरे चैनल पे पोस्ट करूंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस नहीं करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा हंसते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको देखने को और जानने को मिलेंगे इस होटल के एमिनिटीज़ क्या क्या है, और इस होटल का पूरा टूर भी आपको अगले वीडियो में देखने को मिलने वाला है। मैं जल्द ही मेरा अगला वीडियो मेरे चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ, आप उसे भी देखकर एंजॉय कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।